Hello viewers, Jai Hind. NCC special entry. Must know information if you want to ace SSB and you are going for NCC special entry. So इस वीडियो में जो कि आपके रिक्वेस्ट पे मैं खास तौर से लेके आया हूँ, I'm going to talk about certain issues, certain areas that you need to be very careful and watchful about, right? So किस तरह से आपको तैयारी करनी, किस तरह की आपकी अप्रोच होनी चाहिए, इसके बारे में मैं अभी बात करने जा रहा हूँ. So let us see why this special entry. So NCC special entry जिसे हम बोलते हैं, so it is a privilege given to the NCC C certificate holders of the senior division. Now, when you get this privilege, you are exempted from writing a written exam or the qualifying exam, whichever is there, whether it is CDS or FCAT और INET, right? कोई भी एग्ज़ाम जो आप आर्मी नेवी एयरफोर्स की ग्रेजुएट एंट्री के लिए आप को ज़रूरी है करना, वो आपको लिखना नहीं पड़ता है एंड यू डायरेक्टली गेट अ कॉल. व्हाई दिस प्रिविलेज इज गिवन इन द फर्स्ट प्लेस? बिकॉज द सर्विसेज रियलाइज दैट अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड द सी सर्टिफिकेट, he has a very wide exposure, right? See, there is a lot of things which are already taken care of, right? He has arms training, he has attended camps, his level of discipline is good. Then the kind of social adjustment, which is again a very important quality that we look for among the OLQs. Social adjustment उसका बहुत अच्छा हो जाता है because he mixes around with so many people from different parts of the state and the country. So he does improve upon this particular quality. Participation in the different activities. There are so many activities that take place in the NCC, and you have a choice to opt for these activities. Personality development, confidence level है आपकी, जो झेप झिझक है वो दूर हो जाती है. बिकॉज इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट पहले आपको शायद ये मौके मिले ना हो, या आपने बिकॉज ऑफ शाइनेस और सम अदर रीजन यू हैव नॉट gone on to the stage, you have not participated in certain activities. So this is the time where you have opportunities जहाँ पे आप भाग ले सकते हो. और सभी लोग एक तरह के हैं. Like in a school or college, what happens is bulk of the candidates or the students, their focus is on the academics. Now here जब आप NCC में आ रहे हो, so NCC में there are a lot of activities जो सबको साथ मिलके करनी होती है, और इस वजह से सबका जो एक सोच है वो एक तरह की होती है. They all think alike. Then you attend camps, you discuss a lot of things, you have this common interest of getting into the armed forces. So आपका एक personality development तो निश्चित रूप से हो ही जाता है, right? अब कितना होता है, that depends on individual to individual. Other important thing that you benefit from is your motivation. Now, while you are participating, you are in touch with people from the services background, depending on the kind of wing that you have chosen, Army, Navy, Air Force. So, आप उसके जो officers, instructors हैं, उस्ताद लोग हैं, उनसे आपका मिलना जुलना होता रहता है. वो आपको बहुत सारी information देते हैं, and you have a lot of educational visits to the military establishments and of course the camps. तो इससे आपका एक motivation जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है. अभी इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी नो व्हाट आर द नुआंसेस. यह हमारी जो एक ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें, आई थिंक इट्स वर्थ वाइल टू सी द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द एनसीसी कैडेट्स एज फार एज द एसएसबीज आर कंसर्न. नाउ एक चीज़ तो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर eligible to apply for SSB is very high, and उतनी कैपेसिटी बोर्ड्स के पास में नहीं है कि सबको बुलाया जा सके फॉर स्टेज 2 टेस्ट. सो द रिपोर्टिंग रेट फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट इज वेरी हाई. आई हैव सीन batches where there are over 300 candidates. Ones who get screened in are just about 30 odd, right? So it is tough. So इसमें भी जो जिनकी communication skills अच्छी हैं, they tend to do better. Those with a little better academic background, good communication skills, they definitely do better. आपकी if you once you go on to the stage 2, how clear are you on certain concepts? Basically NCC entries की जहाँ तक हम बात करते हैं, so we are also focusing on the intellectual capabilities of the candidate. So it is a balance between brain and brawn, right? आपकी जो physical abilities हैं and mental abilities हैं. So these are the things that are
coming to the fore. So those with better reasoning, better analytical abilities, etc., they tend to do better. कुछ लोगों के बहुत extraordinary achievements होते हैं, right? So they participated in Republic Day parade. They've commanded those contingents. They have participated. They've represented India in the youth exchange program. Now these are very select few people. So just about say 100 to 150 NCC cadets go and exchange, go for this youth exchange program out of almost say 6 to 7 lakh NCC cadets in the senior division. Now that is something which should give you a sense of pride. अगर आप ऐसे किसी उसमें हो तो आप you definitely have that sense of pride in your achievements. Important points आपको क्या देखने हैं? If I look at the overall NCC category of candidates, I find that there are two types of distinct types of candidates. एक हैं जिनका academic record अच्छा है और वो NCC भी कर पा रहे हैं. So they have been able to strike a very good balance and they are pretty organized. It is indeed a challenge कि अगर आप अपने कॉलेज के साथ में, कई लोग बीटेक इंजीनियरिंग के साथ में एनसीसी करते हैं, हालांकि इनकी तादाद कम है, लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी इन एनसीसी को अच्छी तरह से कर पा रहे हो, इट इज़ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू यू एंड फॉर दिस यू डेफिनेटली नीड टू बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. दूसरा कैटेगरी है जो कि हु हैव नॉट बीन डूइंग वेरी वेल एज फॉर द एकेडमिक्स इज कंसर्न. तो उनका इंटरेस्ट स्लिटली स्क्यूड, आई वुड से, इट्स मोर टुवर्ड्स आउटडोर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज rather than in academics. Now, these are the candidates who definitely have a good chance. They develop a lot of confidence. लेकिन they really have to excel. So उनका जहाँ तक जो making up for their academic inconsistencies or poor performance, I think they really have to do very well. So we will discuss as we go by कि कौन से areas हैं जहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है. Now areas where you need to work is सबसे पहले communication, spoken English, knowledge of basic academic concepts. आपका, let us say you're a BSc graduate in mathematics or physics or whatever discipline, or a BTech student, then the kind of specialization that you have chosen, उसमें आपके concepts clear होने चाहिए. उसके ऊपर इंटरव्यू में आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे. एंड जहाँ तक एनसीसी एंट्री की बात है, या बहुत सारी एंट्रीज, डिफरेंट काइंड ऑफ एंट्रीज, द बेसिक टेस्टिंग इज रिमेन्स द सेम, राइट? योर साइक टेस्ट रिमेन्स द सेम, जीटी रिमेन्स द सेम, इंटरव्यू द प्रोसेस रिमेन्स द सेम. हाउएवर द फोकस शिफ्ट्स ऑन टू specifically your domain area, your achievements in NCC as well as your intellectual abilities. So आपके बहुत सारी चीज़ें, qualities जिसे हम बोलते हैं physical attributes, they are accepted, that it is accepted that you would be above average in these, right? Your stamina, your other things, discipline, etc., that will be average plus. So acceptability as far that is concerned, that's not an issue. The issue जो आ रहा है वो is how are you able to reason out things, are you able to analyze things, right? So आपका communication किस तरह, अपने को किस तरह से आप दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, कैसे कन्विंस कर सकते हो उनको. So these are the things that need attention. Improving your awareness, general knowledge, current affairs. Now आज के डेट में, unless until you are very focused as far as preparing for competitive exams, there is general slackness as far as, or I would say lack of awareness as far as current affairs etc. is concerned. So इसके ऊपर आपको definitely ध्यान देना है, particularly those who are coming from say engineering backgrounds or science background. Other thing that you need to also work out is the reasons for choosing NCC. Why have you chosen NCC? आप BTech करो, so why not focus on BTech and do a good job of your BTech, right? Why NCC? Because that takes a lot of time. So you must have very
good reasons for this. How have you been able to achieve balance between NCC activities and studies? So you should be in a position to स्पीक अबाउट दीज थिंग्स, और वो आप तभी कर पाओगे जब आप इसके बारे में पहले सोचोगे. आपके ऑल्टरनेट करियर प्लान्स क्या है? आर्म्ड फोर्सेस और अ पर्टिकुलर सर्विस इज फाइन. Besides this, what are your other options? So we are looking at a person who is well aware of general awareness जिसकी अच्छी है, और अपने फ्यूचर के बारे में भी जो बहुत फोकस्ड है. राइट नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ एनसीसी एंट्री का जो अटेम्प्ट है, नाउ इफ यू आर a person who has also qualified in the written exam and you also have the NCC special entry की वजह से आप उस बैच में जा सकते हो, उस पर्टिकुलर एंट्री में जा सकते हो, then it would be advisable to go for the entry for the batch where your written exam has been taken into consideration. You have passed the written exam. Because आपको एक ही मौका मिलता है, एक एंट्री के लिए आप एनसीसी से भी और रिटन के थ्रू क्वालिफाई करके दोनों से नहीं जा सकते हो. यू हैव टू चूज ओनली वन. सो अगर आप रिटन पास कर चुके हो, माई एडवाइस वुड बी दैट यू गो फॉर द एंट्री जहाँ पे आप रिटन क्वालिफाई करके जा रहे हो. नाउ देयर यू विल फाइंड दैट दिस विल बी एन एडेड एडवांटेज, राइट? बिकॉज द पीपल हु आर कमिंग देयर, they are maybe academically inclined and things like that, और आपके पास में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, उपलब्धियां हैं जो कि आप दिखा सकते हो. सो दैट वुड बी माय एडवाइस. व्हाट आर द एरियाज टू वर्क ऑन? लाइक आई सेड, कम्युनिकेशन इज वन थिंग. योर अचीवमेंट्स. नाउ so many activities are there. What are the activities in which you have some worthwhile achievement? What have been your failures? What are the lessons learned? What have been the challenges? How much of improvement have you brought about in your personality? Right? जब आप अपने को कंपेयर करते हो अपने दूसरे साथियों से, you will find that yes, you have gained a lot as far as the confidence is concerned, your overall personality is concerned. Very when you say that you have gram, or you were made the under officer, senior under officer, or whatever, so there has to be some reason why you have been chosen for such a position. तो ये आपको पता होनी चाहिए. What are the different special or adventure activities that you have done? What is the criteria for their selection? और आपको क्यों select किया गया है? कौन से appointments आपको मिले हैं? किस तरह की weapon firing आपने करी है? And things like that. So these are some of the things that you need to be very, very clear about. Once again, reiterating communication and practicing your OIR. Now, OIR would be definitely having a slightly more weightage, I would say. Your awareness, basic academic concepts, and your analytical aptitude. So if you have been able to work on these, I'm sure you will do a good job of your SSB, right? For any guidance, any help you want, you can always reach out to me as far as the SSB guidance is concerned. So hoping to see you, wishing you all the best for your SSB. Thank you. Jai Hind.